Today we will discuss regarding the tricuspid atresia. So tricuspid की अगर बात करें तो it is a valve which is present in the heart. As shown here, it is present between the right atrium and the right ventricle. This is the tricuspid valve. When this valve is absent or it is closed, then the condition is called as the tricuspid atresia. As shown in this figure. कि यहाँ पे क्या है कि जो ये valve है that is not present, it is absent, then it is called as the tricuspid atresia. अब अगर ये present नहीं है तो blood आगे flow नहीं कर पाएगा, so there will be the need for any type of other heart defect such as AST is present in this condition for the survival. So the blood will flow directly from the right atrium toward the left atrium. From left atrium it will flow into the left ventricle and then to the aorta. Sometime there will be the presence of VST और कभी क्या होता है VST भी present होता है. तो VST non restrictive VST इसमें present होगा जिससे जो blood का flow है that will go into the right ventricle and from right ventricle the blood will flow into the lungs. So sometime अगर सिर्फ AST है तो lungs में perfusion decrease हो जाएगा, blood flow decrease हो जाएगा, but if non-restrictive VST is present then excessive blood will flow into the right ventricle and toward the lung. Atresia का मतलब है absent or the closed. In this the tricuspid valve is absent or closed. It is a single ventricular CHD. Single ventricle means कि इसमें जो right ventricle है वो non-functional होगा और सिर्फ लेफ्ट वेंट्रिकल ही वर्किंग होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल को ही वर्कलोड होगा. देन ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ द ट्राइकस्पिड valve, there is no direct communication between the right atrium and the right ventricle, and ASD is always present in these cases for the survival. अगर ये नहीं होगा तो बच्चा सर्वाइव नहीं कर पाएगा, बच्चे की डेथ हो सकती है वॉर्म में ही. तो सर्वाइवल के लिए एनी अदर हार्ट डिफेक्ट इज ऑल्सो प्रेजेंट सच एज AST और VST. देन अदर कार्डिक एनोमलीज एसोसिएटेड विद दिस कंडीशन इज द VST, ट्रांसपोजिशन ऑफ द ग्रेट आर्टरीज, पल्मोनरी एट्रेसिया और हाइपोप्लेशिया, एओर्टिक स्टेनोसिस और कोआक्टेशन ऑफ एओर्टा और पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस. तो these can also may be present in this associated with this condition. तो tricuspid atresia causes the lower right heart to be underdeveloped because जब right ventricle में blood flow ही नहीं जाएगा तो उस वजह से उसकी डेवलपमेंट नहीं हो पाएगी, जो हाइपोप्लास्टिक राइट वेंट्रिकल उसको बोलेंगे. सो इट इन्वॉल्व्स द एब्सेंस ऑफ द ट्राइकस्पिड valve and hypoplasia of the right ventricle as shown in this figure. कि जो right ventricle है वो क्या हो गया, underdeveloped है, hypoplasia of tissues है और जो right atrium है उसको excessive workload. So a heart with tricuspid atresia is poorly developed on the right side and there will be no tricuspid valve, a right ventricle that is smaller than normal, also called as the hypoplastic, and a hole is always present between the right atrium and the left atrium. So it is called as the AST, atrial septal defect, or sometime there will be the opening of the foramen ovale, and it will allow the mixing of the oxygen poor and the oxygen rich blood. So incidence of this condition is about 1% to the 3% of the CHD. Then pathophysiology, in this the tricuspid valve is absent, so there will be no flow of blood from the right atrium toward the right ventricle, so blood will accumulate in the right atrium. अब right atrium में ही accumulate होगा तो right atrium को ओवरवर्क हो. ड्यू टू एनी डिफेक्ट ये शंट की वजह से जो ब्लड है दैट विल फ्लो डायरेक्टली फ्रॉम द राइट एट्रियम टुवर्ड द लेफ्ट एट्रियम. सो देयर विल बी द मिक्सिंग ऑफ ब्लड दैट इज ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स होगा. सो देयर विल बी डिक्रीज इन द ऑक्सीजन सैचुरेशन एंड फ्रॉम लेफ्ट एट्रियम द ब्लड विल फ्लो टुवर्ड द लेफ्ट ventricle and left ventricle pump blood toward the aorta and lungs by the VST जो मैंने आपको स्टार्टिंग की स्लाइड में बताया था. and there will be the cyanosis because जो oxygen content है blood में that will be. then clinical manifestation, tricuspid atresia symptom usually seen soon after the birth.
and the symptom include blue or gray skin. ये क्यों होंगे? Because there will be the decrease in the oxygen concentration in the blood, and lips may also look blue. Difficulty in breathing because of the decreased blood flow to the lungs. Tiring easily especially during feeding because of the workload of the heart, क्योंकि हार्ट को एक्सेसिव वर्क करना पड़ रहा है. स्लो ग्रोथ एंड पुअर वेट गेन और द क्लबिंग ऑफ द नेल्स. अब वे जो ग्रोथ है बच्चे की वो क्या हो जाएगी? स्लो, बिकॉज ज़्यादा कैलोरीज कहाँ यूज हो रही है? हार्ट की ओवर वर्किंग में यूज हो रही है. सो कैलोरीज आर नॉट यूज्ड फॉर द ग्रोथ. डिक्रीज इन द ग्रोथ एंड पुअर वेट गेन. देन क्लबिंग ऑफ द नेल, बिकॉज जो एक्सट्रीमिटीज हैं वहाँ ऑक्सीजन रिच ब्लड नहीं जा पाएगा, विच विल लीड टू द क्लबिंग ऑफ द nails. Then the child is less active. Some people with tricuspid atresia also develop symptom of the heart failure. Heart failure may such as fatigue and weakness, shortness of breath, swelling in the legs, ankle and feet. अब ये क्यों होगा? Because right ventricle work नहीं कर रहा है, तो right atrium has to overwork. Right atrium से blood का क्या हो जाएगा? Backflow होगा toward the inferior vena cava. So inferior vena cava congestion हो रहा है blood का, that will lead to the congestive hepatomegaly. जो लीवर के नियर बाय जो वेन्स हैं, वेस्कुलेचर है, उसमें भी प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा. that will lead to the leakage of fluid into the free cavity, जैसे कि abdominal cavity में ascites हो जाएगा, which will lead to the abdominal distension. So swelling of the belly because of the ascitic fluid, and the condition is called as the ascites. Sudden weight gain क्यों हो रहा है? Because of the fluid built up in the body, so there will be the weight gain. Diagnostic evaluation में auscultation में single second heart sound is present, because जो first heart sound है which is due to the closure the tricuspid valve, and that is absent because it is not present. So only one heart sound is present. Chest x-ray से pulmonary vascular marking का पता चलेगा कि decrease होंगी इसमें. ECG right to left atrial hypertrophy. Then echocardiogram, cardiac catheterization करेंगे, that is necessary for the to check the anatomy, pressure and the valvular function के लिए. And fetal echocardiogram can be done during the prenatal period. Fetal echocardiogram can also be done. Then medical management में stabilize with the prostaglandin infusion. ये क्या करेगा? It helps the ductus arteriosus to remain open, and in severely cyanotic neonate prostaglandin even infusion देंगे 0.05 to 0.1 mcg per kg per minute. IV is infused to prevent the closure of the ductus arteriosus so that it will remain open. And क्योंकि यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन सैचुरेशन बहुत ज़्यादा लो है, child is having the cyanosis, so there is a need for intubate and ventilate as needed. Inotrope support is given so that the heart muscle will contract effectively, or it is also having the negative chronotropic effect, so it will decrease the heart rate, for example digoxin. And then infective endocarditis prophylaxis are also given to the patient to prevent the infection. Then surgical management में first surgery, that is modified Blalock Toshing shunt या तो pulmonary artery band का यूज करेंगे. तो modified Blalock Toshing shunt में क्या होता है, इसमें शंटिंग कर देंगे सबक्लेवियन आर्टरी और pulmonary artery के बीच में एक शंटिंग कर देंगे, so that the blood will go toward the lung में वो जा सके. So it is indicated if the pulmonary blood flow is sufficient, जैसे कि if the VST is not present, only क्या present है, AST present है, तो उस कंडीशन में ये करेंगे. Then pulmonary artery band, तो ये कब करेंगे, जब लंग्स में एक्सेसिव ब्लड फ्लो जाएगा, क्योंकि इन केस ऑफ AST एंड नॉन रिस्ट्रिक्टिव VST, अगर नॉन रिस्ट्रिक्टिव VST है तो डायरेक्टली ब्लड कहाँ आ रहा है, राइट वेंट्रिकल में आएगा, राइट वेंट्रिकल से कहाँ जाएगा, वो लंग्स में जाएगा, तो एक्सेसिव ब्लड लंग्स में जाएगा विच विल इंक्रीज द blood flow toward the lungs and it will cause the pulmonary hypertension. So it is indicated if the blood flow is excessive, it often performed on the first to third month of the
द एज। तो इसमें जो पल्मनरी आर्टरी है उसमें एक बैंड प्लेस किया जाता है सो दैट द लिमिटेड अमाउंट ऑफ ब्लड कैन फ्लो थ्रू द pulmonary artery. So no treatment is required if the pulmonary blood flow is balanced. Then the second surgery is done between the age of 6 to 9 months by directional gland shunt or hemi-Fontaine shunting. 6 to 9 मंथ में ये प्रोसीजर किया जाता है। तो ये हार्ट के वॉल्यूम लोड को रिड्यूस करने के लिए ये किया जाता है। इन दिस देयर विल बी द कनेक्शन बिटवीन द सुपीरियर वेना केवा और द पल्मनरी आर्टरी। अब यहाँ जैसे दिखाया गया है कि सुपीरियर वेना केवा से अपर बॉडी पार्ट से ब्लड कहाँ आता है, हार्ट में आता है। तो ये डायरेक्टली इसकी शंटिंग की जाएगी पल्मनरी आर्टरी के साथ सो दैट द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड विल कम टुवर्ड द लंग फॉर ऑक्सीजनेशन। तो इसमें ये प्रोसीजर किया जाएगा। देन नेक्स्ट प्रोसीजर इज जो थर्ड सर्जरी है दैट इज डन बिटवीन द एजेस ऑफ 18 मंथ टू 3 ईयर्स। तो इसको फॉन्टेन प्रोसीजर बोलेंगे। इसमें जो शंटिंग की जाएगी दैट इज बिटवीन द पल्मनरी आर्टरी एंड द इंफीरियर वेना केवा के बीच में। जैसे यहाँ बताया गया है कि दिस इज द इंफीरियर वेना केवा एंड दिस इज पल्मनरी आर्टरी। तो इन दोनों के बीच में शंटिंग की जाएगी सो दैट द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड विल फ्लो डायरेक्टली टुवर्ड द पल्मनरी artery. So used in the older children. Then complication of this condition include the congestive heart failure, persistent pleural effusion हो सकता है, ascites हो सकता है, thrombus formation हो सकता है, infective endocarditis and rarely there will be the heart block. So immediate nursing management में ensure airway patency because इसमें क्या है साइनोसिस at birth ही साइनोसिस देख सकते हैं. So ensure airway patency, give oxygen therapy to the child, monitor for saturation of oxygen that it should be maintained more than 90-95%, start prostaglandin infusion so that the ductus arteriosus will remain patent, open रहे वो, establish IV access, 2 bore cannula लगाएंगे और IV fluid administration करेंगे, monitor perfusion, capillary refill, pulse वगैरह check करेंगे and avoid fatigue because it will increase the workload of the heart, give NG feeding or gavage feeding if needed and reduce oxygen demand by keeping the baby warm रखेंगे and calm, minimal handling and prevent the baby from crying. तो उससे क्या है कि जो ऑक्सीजन डिमांड है वो बच्चे की नॉर्मल रहेगी, इंक्रीज नहीं होगी. So these are the nursing diagnosis of this condition. And some important point regarding this condition that the tricuspid atresia is a cyanotic congenital heart disease. Tricuspid valve is absent in the tricuspid atresia and right ventricle क्या रहेगा hypoplastic because उसका work ही नहीं हो पाएगा. So जो tissues हैं they will underdevelop. Cyanosis is a common clinical feature of this condition. Mixing of oxygenated or deoxygenated blood causes the cyanosis. Atrial septal defect is essential for the survival of the tricuspid atresia and ventricular septal defect is commonly associated with the tricuspid atresia. अब इसमें AST तो definitely present ही होगा but sometimes VST is also present. So pulmonary blood flow is decreased in severe tricuspid atresia and echocardiography confirms the diagnosis of this condition and heart failure is a major complication of the tricuspid atresia. So this is all about the tricuspid atresia. In this the tricuspid valve is either absent or the closed and its cause is pathophysiology and management and some important point regarding this. So thank you.